mission and vision of Ficci Flo is to empower women. हमारे पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स है, वेदर इट्स VLCC, वेदर इट इज़ हुनर कोर्सेज, एंड देन वी हैव द टेली कोर्सेज. She is training lots of girls rural kids, who are not as privileged, and even for financial skilling, which is very important. जोश बहुत है जी. हम 2 दिन में 4 इवेंट्स कर रहे हैं, इससे ज़्यादा जोश क्या होगा. One of our prime focus is that we also kind of promote education, knowledge, learning. So for us is very primary focus. ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਸਕਣ. ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਏ हैं क्या कहना चाहेंगे फिक्की फ्लो को जो अमृतसर चैप्टर है उसको कैसे देखते हैं? I think it's one of the most awesomest. It's one of the youngest chapters, and Dr. Simharpreet Sandhu beside me is the 7th chairperson of Ficci Flo Amritsar chapter, and we have more than very empowered 400 members, 400 plus members in the chapter, and we are doing a lot of work. Our mission and vision of Ficci Flo is to empower women and economic empowerment of women, and we are with Simharpreet's leadership, I think we are really touching and impacting lots of lives. The 3 words is there: digital literacy, financial literacy and river livelihood. So इसको आप कैसे करेंगे, क्या होगा इसका मकसद और इसको क्या करना चाहते हैं भारतीय औरत को? Actually वो हो ही रहा है, मतलब these are our national initiatives across the country. हम लोग को we have 20 chapters and head office दिल्ली में है, and these are our national initiatives, our digital skilling. So we train abhi ye Amritsar mein Dr. Simharpreet has done in Tally. Tally, I mean she is training lots of girls rural kids, who are not as privileged, and even for financial skilling, which is very important, and rural livelihood also. I mean, you can see, I think we can also show the packets for agarbatti making. So I think so Simharpreet, I think you can tell about the 3 projects. Comes from them. So I started the year in a reverse way. I went to them, they are my advisors. I tell them, tell me a real person working in the village. Tell me, because that is the right access. So this number of the Agarbatti guys came from the press only. They said, thank you so much. तो हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे. कितनी ज़रूरत है जिस तरह से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है भारत में, आप किस तरह से इसको लेकर जाना चाहते हैं और क्या समझते हैं कि गाँव में इस तरह की प्रतिभा है? नहीं ज़रूर है. इनफैक्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, वी हैव impacted more than 1 lakh girls and women across the country. So it is very important because the strength, like 50% population of the country is women, and we are a young country, a lot of young population. So and Ficci Flo, we are committed very passionately. We work towards, having especially, those girls and women who are not as privileged as us, कि उसको ऊपर आगे कैसे बढ़ाए. डिजिटल लिटरेसी की बात करें, आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा है. सो आप समझते हैं कि इस तरह से उनको बताना ज़रूरी है ताकि हम डिजिटल अरेस्ट से बच सकें? No, it is very, I think there was already one incident where I think our chairperson was able to help. It is very, very important कि digital literacy, digital literate होना important है, because
जितना अच्छा है it can be also work. We have Yeah. Rakshit Tandon, who is in Flow. There are beautiful way of structuring the bodies. So the president is on the top of it. Then there are initiative heads, and in that there are some members working, and then we work under them. So it's all कितना ये कितना बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप बच्चों के लिए खास करके कर रहे हैं कि डिजिटल के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, उसका आज के युग में कितनी ज़रूरत है? वो टैली कर रहे हैं, और आपको पता है टैली तो बहुत ज़रूरी है टू गेट इनटू एनी जॉब, और ये सब हम तो प्रूफ के साथ लेके आए हैं प्रेस को बताने के लिए कि हमने जो बोला था 7 महीने पहले, तो द फर्स्ट बैच इज़ ऑन. हमारे पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट्स है, वेदर इट्स BLCC, whether it is Hunar courses, and then we have the tele courses. तो हमने तो अपनी जो ऊपर खड़े होकर प्रॉमिस की थी वो कर ली. अब तो हम और बुलंद हो गए, हमारे हौसले. आप क्या कहेंगे, पंजाब कितना इम्पॉर्टेंट है अगर फ़िक्की फ्लो, अगर औरतों की बात की जाए, क्योंकि फ़िक्की फ्लो ज़्यादातर औरतों की रिहेबिलिटेशन या उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है? It is, I mean, like Punjab, I would say one of the most happening, like very empowered women here, and हम लोग का 400 plus, yes, and 400 plus members, who are with us today in the chapter. They add a lot of value. Each of them is a success story by themselves. आगे किस तरह का विज़न रहेगा फ़िक्की फ्लो का पूरे भारत में कि औरतों को सशक्त करने के लिए, लिटरेसी के लिए किस तरह से काम करेंगे आप? So in fact हम लोग क्या, and in Ficci Flo हम लोग का mandate है that we work with women across levels. एक है हम लोग अपना मेंबर के लिए भी क्या करता है, एक रूरल वुमेन के लिए क्या करता है. सो इट इज़ all our initiatives are on a continuous process. वो रुकता नहीं है. सो एंड like the times are very changing, बहुत dynamic है. Digital space में it's like fast changing, new things are happening, coming. So we have experts coming in from that fields. हम लोग का online में बहुत workshops होता है, online में बहुत होता है. जिस तरह से यहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स शुरू किया गया है, क्योंकि एजुकेशन का अब मेथड बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह भारत सरकार ने भी कहा है कि अब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर स्किल सेंटर खोले जा रहे हैं. कितना ज़रूरत है और कितने बच्चों को आप नीचे रिक्रूट कर रहे हैं इसके लिए? So it is, I mean, the skill centers, the government is doing, like for us as Flow, we are the facilitators, we are the catalyst. So हम लोग का ये है that we kind of connect all dots, get all the stakeholders together in it, get them connected, we mobilize, and we ensure that things are getting done. Any target you have in your mind? I think look at the population of the country. So there is no target. Obviously खुद को अच्छा लगता है जितना आप कर सकते हो. So the sky is the limit. The more, and we actually look for partners, funders. जो मैम है उन्होंने अपना ऑफिस संभाला, उन्होंने बोला कि कंटिन्यूटी करो. तो अब आपके पास कंटिन्यूटी, जो प्रोजेक्ट पंख की लड़कियां मिशन दीप की, दे आर फ्रॉम ईयर 1. कहते हैं इंडिया स्टार्ट फ्रॉम पंजाब, पंजाब ने शुरू किया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि स्किल के लिए ये आगे आ रहे हैं और इनवाइट भी कर रहे हैं बच्चों को आने के लिए, तो ये इसको किस तरह से देखा जा सकता है पंजाब की इकोनॉमी के लिए, पंजाब को प्रोग्रेस करने के लिए? Actually, if you see that education is very important, right? We stress on education because ultimately हर चीज़ आप लोग का जितना problem शुरू होता है, and any and everything starts with education. So one of our prime focus is that we also like kind of promote like education, knowledge, learning. So for that, for us is very primary focus in that area. तो आप खाली ये 3 देख रहे हो और बहुत दिखाई देते हैं आपको. तो ग्रेजुएशन सेरेमनी है एक तरह की सेरेमनी, तो आज कुछ स्पेशल होने वाली है, आई थिंक सो. नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स. तो आप खाली 3 देख रहे हो यहाँ. So 3 कंप्लीट हुए हैं जिनके हमें सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बट इतना इनिशिएटिव है. 18 तो शरेआम है, एंड देन छोटे और बहुत सारे. और आगे ये काफिला चलता रहेगा? Oh yes, without doubt. I mean, actually Ficci Flo, which is a women's wing of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So that itself is nearly 2 years, 2027, it will be completing 100 years. And I am the 41st national president. So there's a lot of legacy behind it, and a lot of legacy that we have to create. Lots of work to do. Lot of work to do.
यस हाँ जी मैम, किस तरह का रहेगा जी आज जिस तरह से नेशनल मैं तो प्रेसिडेंट ने इतनी बनाया खुश हूँ कि नेशनल प्रेसिडेंट आए। वो किसी भी चैप्टर चेयर की ड्रीम होती है कि प्रेसिडेंट उनके चैप्टर में आए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है हमारे मेंबर्स को, एंड दैट इज़ वाई वी आर वेरी एक्साइटेड। और हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक, इट्स अ हिस्टोरिकल डे for Flo Amritsar chapter, that the national president is not only visiting the chapter for the first time, she's come to Punjab for the first time. जोश बढ़ेगा, हाउस द जोश? जोश बहुत है जी। हम 2 दिन में 4 इवेंट्स कर रहे हैं, इससे ज़्यादा जोश क्या हो। तो लड़कियों को लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए उसके लिए भी जोश चाहिए ना? तो वो तो आपको पता है, जोश की तो कोई कमी नहीं है। आपको तो पता है सुमित, हम सारा दिन विलेजेस में ही होते हैं, एंड वी वांट टू, हर बार ये बात है कि दीज गर्ल्स, सपना है कि गांव की लड़कियों को आगे आना चाहिए। और ये गर्ल्स आर पार्ट ऑफ अ पार्टी। ये नहीं है कि मैंने उनको बोला कि आप साइड पे बैठो, दे पार्टी विद अस, दे एंड ऑल्सो दैट डेवलप्स देयर पर्सनैलिटी, सो दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड वी लव देम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।